Good afternoon, everybody. A very warm welcome. आज का session isomerism. We have already started with isomerism, and I'm hopeful that you have gone through the previous session of isomerism that we have done, which was on structural isomerism. आज का agenda is right on the top of my head, huh? Stereo isomerism. So I hope all of you are all set. हाँ अभी let me set the agenda right and let me let you know how and in what manner we're going to proceed. So good afternoon everybody. Hey Ankit, hey Anshul, Shravani, Rakesh, Yuvraj, Jiban Darji, okay, from Nepal, lovely. Chalo, warm welcome to all of you. I hope that you have come prepared revising the previous session and what we have done in the previous session. I hope you remember all of this. Right? Structural isomerism, we saw chain, position, we saw functional, ring chain, we saw metamers and tautomers. We have seen it full-fledged तरीके से, एकदम मस्त A to Z. आज का क्या एजेंडा है? आज का एजेंडा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. What are stereoisomers? We have to see. Right? आप मुझसे पूछ रहे हो सिलेबस के बारे में. मैं लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. सिलेबस देखिए मैं थोड़ा सा स्लो अभी इसलिए कर रही हूँ. आई डू नॉट वॉन्ट द बेसिक्स टू गो एनीवेयर लेफ्ट और राइट. इसके बाद क्या करेंगे जब हम आफ्टर आइसोमेरिज्म इज ओवर, as in when we will enter the chapters, every day one session means one chapter, and I hope I will be able to increase the frequency also. So don't worry, I will make sure we do the syllabus together, right? But I want full commitment on your end, full participation on your end, some word of mouth from your end. I hope that if you're liking the sessions, if you're finding it useful, if you're finding it class apart, please share. That is very important for us as well, right? And having said that, I hope you are already on the Telegram channel where we are sharing the notes, right? अब last दोनों sessions के notes मैं आज roll out करूँगी. So make sure you take a good look at them also. Watching the sessions after the stream, it will be great if you watch it together, right? ठीक है? I'm assuring that it takes a lot of hard work to bring it all together. देखिए अगर मैं हर चीज़ ये लिख कर करती ना, so trust me on this, we would be doing the same thing for 5 months. Same thing, अगर मैं सब कुछ लिख रही होती. But what we do is we collaborate in such a manner that we bring the best in one form of PowerPoint presentation, and we just navigate through. So a lot of work goes in before the session rather than in the session. You understand? Because trust me, every slide is a piece of beauty. I repeat, every slide is a piece of beauty. Every single frame that you observe is a beauty altogether, is a thing of beauty, and thing of beauty is a joy forever. Huh? So having said that, now I think, needless to say, if you're liking, please do hit the like button. If you are just watching and not subscribed, please subscribe and enter. Now let's get started with today's agenda, which is stereoisomers. So how are we going to go about? Let me give you some analysis, some navigation कि कैसे हम navigate करने वाले हैं. बच्चा पार्टी stereoisomers में दो चीज़ें बहुत important है, geometrical isomers और optical isomers. Geometrical isomers हम पूरा आज खत्म करेंगे. Optical isomers का पूरा summary आज हम करेंगे. But it is like doing theory of driving. Can you learn driving with just theory? I just tell you what is ABC of driving, what is accelerator, what is brake, what is clutch, how do you change the different gears, what is 1, what is 2, what is 3, what is 4, what is 5, what is reverse. If I give you the theory and I expect that you will be able to drive, will you be able to drive? No, right? So is with the stereoisomerism. So I know that I
can just end today's session by completing stereoisomers, and I can start with haloalkane or hydrocarbons. I will start first. So I will start with hydrocarbons next, but I know that that will not do justice. So I am planning next session 50 questions, best questions based on isomerism. So I hope those 50 questions, and you will be, I'm sure, very benefited from the 50 questions, because in one form or the other, you will be able to complete the entire syllabus and it will be like a game. After this, GOC and isomerism, I think everything is all chill and done and super fully done. Right? I saw some of you asking me, ma'am, IUPAC nomenclature, please le lijiye. I would suggest that IUPAC nomenclature is not something that I'm going to take exclusively. Right? Exclusive नहीं लेने वाली हूँ मैं. Inclusively along with the chapters we will deal with that. But अगर आप फिर भी चाहते हैं, do make sure you download the Akash Byju's app, and there I have dealt with this topic of nomenclature in the best possible visual and explanation manner. So do try. If you want an exclusive session on IUPAC nomenclature, go to Akash Byju's app and go to this isomerism as well as the nomenclature chapters, and you will see nicely huge number of questions are dealt with, n number of rules are done. But I would recommend those who have a session, who have paper pending in January, then you need to gear up and you do not have time to watch the entire thing. So practice IUPAC nomenclature with questions in that way. And if you're somebody who has time, then make sure you see the entire video, entire recorded video, which is available on Akash Byju's app. So, are we all set? समझ में आया कि क्या करने वाले हैं हम? आज ये दोनों को देखने वाले हैं और 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, सारे के सारे अच्छे सवाल प्रीवियस ईयर के साथ. और इसके अंदर, just to ensure that you are well versed with what we have done so far, we will also do GOC. I was thinking, Shaurya, to do reaction mechanism separately, but reaction mechanism को separately करने का मतलब है another 4 sessions, and I think we do not have that much time, right? So reaction mechanism, those of you who still have time, we will take it up next time, in the sense कि जो हमारा ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कराने का एजेंडा वो ये है कि वी कवर अप द इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ऑल द रिएक्शन मैकेनिज्म्स आई विल बी डूइंग अलोंग विद द चैप्टर्स. हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन है, तो आई विल डू एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स. हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में SN1, SN2, SNI, SNAR है, तो आई विल डू SN1, SN2, SNI, SNAR विद हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. सिमिलरली अगर आपके पास अल्कोहल का नॉलेज है, तो E1, E2, E1CB जो है, आई विल डू विद अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर. So you get that the entire reaction mechanism will be covered, but along with the chapters. I think that makes sense, right? But if you would want कि मैम एक reaction mechanism का full-fledged एक session conduct करो, so I will see how I can manage my schedule and come up with a session like that. Depends on your participation, your involvement and your feedback. Okay? चलो अब start करते हैं agenda जल्दी से. चलिए स्टीरियोआइसोमर्स क्या है मैं आपको बता ही चुकी हूँ. 3D में देखते हैं हम इन आइसोमर्स को. आइसोमर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओनली इन द वे द एटम्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस. कैसे बैठे हैं एटम्स 3D स्पेस में, स्पेस के अंदर. These isomers have same connectivity of atoms and group. यहाँ पे unlike structural isomers connectivity नहीं change हो रही. connectivity बिल्कुल same है, but जैसे ये बैठे हैं वो change हो रहा है, right? So there is another stereoisomer per se which we sometimes keep separate also, sometimes we keep it with this 3D or space isomers also, is conformational isomers. मैम आप conformational isomers कब कराओगे? Conformational isomers भी मैं hydrocarbons के साथ ही कराऊंगी. I'll write it here. So I'm not doing conformational isomers. They are isomers they are isomers, but what kind of isomers are they? They are not true isomers. Why are we calling it not true isomers? क्योंकि भाई इनको ना isolate नहीं किया जा सकता. और
कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो फ्री रोटेशन होता है उसके वजह से बहुत सारे जिलियंस ऑफ कॉन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल विच आर नॉट समथिंग दैट वी कैन डिस्टिंग्विश. थियोरिटिकली दे एग्जिस्ट, practically we can't isolate them. So they're not true, and hence I'm not going to talk about them in today's session or in next session also. This will be dealt with hydrocarbons. The perfect place for them. Okay. So stereoisomers we've understood. Okay, connectivity same है. 3D में जैसे molecules बैठे हुए हैं वो different है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ fumaric acid and malic acid, ये दोनों compounds आपको अच्छे से पता है अब. Fumaric acid is a trans form and malic acid is a cis form. दोनों के melting points में बहुत फर्क है. दोनों के केमिकल बिहेवियर में फर्क है. एक एसेंशियल मेटाबोलाइट है, एक टॉक्सिक है, इरिटेंट है, राइट? सो मेलिक एसिड टॉक्सिक है, बट वेराज फ्यूमेरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट है, राइट? सो दैट मीन्स यस, when we talk about two different stereoisomers, let's say two different geometrical isomers, then they might have the same molecular formula, same empirical formula, same molecular mass, same empirical mass, same vapor density, blah, blah, blah. But what's different? What is different? Their at least one physical property is different, at least one, and their chemical property might be different, okay? Can a 11th class student attend this lecture? Absolutely, alkenes are a part of class 11th, right? Alkene 11th का ही part है. Optical isomerism, whereas where do you see it in NCERT? You see it in haloalkanes and haloarenes. चलो, तो आज का एजेंडा सेट हो चुका है. आपको पता चल गया है कि हमारा एजेंडा सिर्फ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पे है. कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कुछ नहीं है बट वो वाले आइसोमर्स हैं जहां पे हम जीआई और ओआई की बात करने वाले हैं. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो जीआई को स्टार्ट कर देते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को स्टार्ट कर देते हैं. यू नो दैट जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम होना मांगता है. What are geometrical isomers? Isomers which possesses the same molecular and structural formula, obviously, but differ in the arrangement of atoms or groups in space due to restricted rotation. Now let's understand this term. इसका क्या मतलब है restricted rotation? जैसे कि मैंने आपको बताया कि conformational isomer जो हम नहीं कर रहे हैं अभी, वो क्या है? वो ऐसे आइसोमर्स हैं जहां पे हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेते हैं. लेट्स से वी टेक इथेन, ओके? आई कैन फिक्स लेट्स से one carbon and try to rotate this bond by holding this second carbon. So if I do that, you know that I can rotate it by 1 degree, by 1.1 degree, by 2 degree, by 2.5 degree, 2.55 degree, 2.515 degree. Do you understand there are infinite numbers possible between 0 to 360? You get that? And if there are infinite numbers possible from 0 to 360, then there are infinite conformers. And here the rotation was free. But let's say we restrict this rotation. Now what do I mean by restricting the rotation? Let's understand that the pi bond is formed because of the sidewise overlapping like this. So if I again in the similar fashion fix one carbon and try to rotate this bond, do you understand the pi bond will break? And hey, we're not supposed to do any kind of break. I mean, we can't break a molecule. We're not supposed to do any kind of lysis. We're not supposed to break this pi bond. Here we were not breaking anything. The entire molecule, the CH3 part was moving as we were moving this carbon-carbon sigma bond. So along the sigma bond we could carry out the free rotation, but around a pi bond, since the molecule will break, the pi bond will break, we have a restricted system coming up. So pi bond is the famous restricted system that you know. But a double bond is not the only system that is a restricted system. And mind you, this is just one of the conditions, folks. What do I mean by it is just one of the conditions? सबसे पहले अगर आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर्स चाहिए तो क्या होना मांगता है? रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम होना मांगता है. रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम होने का मतलब क्या है? कि हमारे पास फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है.
अगर हम रोटेशन करेंगे तो बॉन्ड टूट सकते हैं। तो क्या हमारे पास एक डबल बॉन्ड में ही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है? नहीं। और क्या क्या सिस्टम्स हैं? हो सकता है आपके पास एक रिंग हो इस तरीके से, इसके अराउंड में मिथाइल लूं, लेट्स से इस तरीके से। सो दिस इज ऑल्सो अ रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम। डू यू अंडरस्टैंड? इफ यू सी इट्स ओवरलैपिंग, ये साइक्लो रिंग की ओवरलैपिंग अगर आप देखो और इस सिस्टम को मैं एक रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम मानूं, तो आपको पता है कि अगर मैंने रोटेट करने की, लेट्स फिक्स one carbon, one bond like this and try to rotate, okay? So if I try to rotate the bond, like let's restrict this thing and try to rotate, we can't. We can't, right? Your ring will break if we rotate this kind of a system. So even this is a restricted system. A cyclosystem is a restricted system. In fact, such systems are also restricted system where you have carbon double bond nitrogen, nitrogen double bond nitrogen, or a ring with an alkene. This all is a restricted system. So all of them can show geometrical isomerism. Now mind it carefully. The wordings are important. I'm saying they may show, they can show. I'm not saying they will show or they are showing. I'm saying they may show. इसका मतलब एक और कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो आपको माइंडफुल रहना है वो क्या है? दैट यू शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स अलोंग द टर्मिनल्स। आपको टर्मिनल, जैसे कि अगर मेरा रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम एक साइक्लो सिस्टम है, तो आप मान लो ये एक टर्मिनल है और आपका ये टर्मिनल है, यहां पे आपके पास डिफरेंट, सेम ये वाले टर्मिनल पे देखो ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, दे शुड बी डिफरेंट। फिर आप इस टर्मिनल को देखो, ए और बी डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम है, ए और ए प्रेजेंट है, then it will not show, even though there is cyclic system, but it will not show geometrical isomerism. ठीक है, तो आपको आई एम श्योर क्लियर हो गया है। दो कंडीशंस है अगर हम जीआई को देख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी अ रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम, सेकेंड कंडीशन इज देयर शुड बी डिफरेंट atoms or groups attached to the different terminals of the doubly bonded system or the restricted system. Okay? Now, very important. आपका लोन पेयर भी एक डिस्टिंक्ट ग्रुप की तरह कंसिडर होता है और आइसोटोप्स डिफरेंट ग्रुप की तरह कहला सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये H है, ये D है, ये H है, ये D है, कैन आई से दैट दिस will show isomerism, GI specifically? The answer is yes. It will, it can, and it will for sure. But before I start giving you questions like you're asking King Fan, before I start giving you the questions, I'm sure the question is still unanswered, that why are we calling this category as geometrical isomer? Huh? Geometry क्यों? Do you understand what is changing here is just the geometry, and what geometrical parameter are we talking about? The geometrical parameter that we are talking about here is bond length. Geometry in space बदल रहा है। क्या geometry specifically? Bond length. अगर मैं दो atoms या फिर जो groups साइड में लगे हुए हैं टर्मिनल्स पे, उनके कोर से एक दूसरे के कोर से लाइन खींचूं, तो अगर बॉन्ड लेंथ एक अगर ए है, तो सेम एटम अगर दूसरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बैठा हुआ है, लेट्स से हियर बोथ आर टुवर्ड्स द सेम साइड, सो दिस यू नो दैट इज अ सिस फॉर्म एंड दिस इज अ ट्रांस फॉर्म वेयर एक्स एंड एक्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर. So if I take the same atoms x and put a line between them, the distance between the two is going to be a, let's say. But if we take the other form, the distance between the two is coming out to be b. So their distance from each other is changing. Geometry hence is changing. You get that? Right? So like I said, there can be a cis form or there can be a trans form.
In fact, there is another way of addressing them. Cis and trans, I'm sure everybody knows. There is also another way of calling them, syn and anti. When do we use it? We use it specifically for ESO and for oximes, right? There is also third one, which is not a part of JEE syllabus, be it mains or advanced. This is clearly mentioned in the syllabus, not in syllabus. So if you're doing it, that means you have a lot of time for you. The syllabus clearly mentions that E and Z is not a part of your syllabus, but sometimes indirectly examiner would want you to have a knowledge of E and Z that I will take care of in just a bit. So let's see where the cis and trans kind of a system is possible. So I'm sure cis you know, cis trans system you know already. If we take a carbon double bond carbon, and it is based on similarity of the group. So when we talk about cis and trans, the same type of groups are on the same side, then we call it cis. If the same type of groups are on the opposite sides, we call it trans, right? So if you look at this example, it is very much clear that cyclo system is a restricted system. H and H is towards the same side. COOH, COOH is towards the same side. So this is cis form. This one is a trans form, right? All set, all cool so far. बच्चा पार्टी आ रहा है, सब समझ? करे सवाल? बैंग ऑन क्वेश्चंस है, रैपिड फायर क्वेश्चंस है आपके सामने आने वाले अब. Chalo. Let's get started. Everybody on your toes. Let's see who gives the quickest answer. You will be totally judged on the basis of the answer skills. Basically, all that you have to tell is whether the compounds that I'm going to show is going to show geometrical isomerism or not. How? You have to keep in mind the two conditions. Condition number 1, there should be a restricted system. Condition number 2, very simple, different atoms or groups on either side of the restricted system. If that is the case, now these conditions might not hold true when we are going to take the examples of cumulines / biphenyl system. There are some other things are to be kept in mind. So special cases I'm going to do later. But right now I'm keeping it to the core. Whatever we have done so far, let's keep that and start. So here you go. First compound, question number 1 coming your way. Bombard me with the right answer. Will this compound show geometrical isomerism? Let's see. Okay, restricted system, yes. Different atoms, yes. Different atoms, yes. So, absolutely right. Dhairya, good king, good Vishnu, good Shaurya, good king fan, good Dhairya. Very good. Chalo, next one. Question number 2. Will this show geometrical isomerism? King fan is saying no, Dhairya is saying no, Vishnu is saying no, Shaurya is saying no, Sanyam is saying yes. King fan is saying of course no. Rushabh is saying no, Sanyam is saying no. So, of course, if you see, we have restricted conditions. Restricted bond is there. The first condition is fulfilled, but the second condition is not fulfilled. यहाँ पे chlorine है, यहाँ पे chlorine है. दो अलग-अलग atoms हैं along this system. So no, it's a big no, right? अलग-अलग system नहीं है. We need to have different atoms. Here we have same atoms हैं. यहाँ पे भी same atoms हैं. एक भी टर्मिनल पे सेम हुए तो फिर हमारे पास GI नहीं होगा, right? Next one, third question. Let's see.
Come on, bombard me with the right answer, everybody. Very quick. Rapid fire questions, these are. Rapid fire. There is saying no. King fan, no. Shaurya, no. World of Mr. Motivator, yes. Are you trying to motivate somebody by saying a yes? Vishnu, no. Sayyam, no. Rushabh, no. Sayyam is saying clearly no. So of course, if you see hydrogen and hydrogen are there, so there is no doubly bonded system but rather triply bonded system, and in triply bonded system there is no option of having two different groups on either side of the restricted system. Two different to hai nahi, ek hi possible hai na, tetravalency. So this is a big no. Next one. What about this? So this becomes question number 4. There is saying no. King fan, no. Rushabh, no. Shaurya, no. King fan now is saying a big no. So I'm sure you're able to see this. If not, please rotate this, flip it, and if you flip it, you would see it is nothing but this. Hydrogen or hydrogen laga hua hai yahan pe. So if you see this particular terminal, it has the same atoms attached, and you need to have different atoms attached, right? So of course, this kind of a system, even though one terminal had the condition fulfilled, the other terminal had the two same atoms, which makes it a big no. Big no. Next one. Question number 5. Fifth is a yes, Rushabh is saying. Dhairya is saying yes. Sayyam is saying yes. Shaurya is saying yes. King fan is also saying yes. World of Mr. Motivator is also saying yes. Sayyam ने आराम से अपना टाइम लेते हुए Sayyam से बोला है yes. Mradul is also saying yes. Mayank is saying yes. हाँ, obviously इनके तो नाम भी पता है. Good धैर्य. इनके तो नाम भी पता है हमें. Malic acid and fumaric acid, two different isomers possible for this kind of a compound. Yeah, here. Yeah. So, of course, it's a big yes. No doubt about it. यहाँ पे देख लो H यहाँ पे और यहाँ पे. So, it's like the two hydrogens and two carboxylic acids are opposite. And if we keep it like this, COOH and COOH, then this becomes a cis form. So yes, it shows GI. Question number 6. Here you go. What about this? Come on, bombard me with the right answer. Very quick. Will hydrogen bond? हाँ, stability पे आएंगे ना, one step at a time बच्चा. Stability पे अभी आएंगे. So 6th is like Dhairya is saying, like Shlok is saying, King fan is saying, Arc reactor is saying, Arjun is saying, Rushabh is saying, and I'm sure Ayush, you do not want to say this, but you are saying this. Huh? Yes ki possibility hai hi nahi. Where is the other atom? Huh? How will you make a cis and how will you make a trans? This is sp hybridized, this is sp hybridized. The possibility of fourth valency is not there already. One can attach. So what about cis and what about trans? Not possible. It's a big no. Right? Next one. Question number 7. So, most of you are saying yes. Good to know that, Shailendra.
Chemical bonding, I think Ashish sir has already taken or is going to be taking. I am sure, Mayank, you are checking the channel properly and in and out. Ashish sir is taking care of chemical bonding. Okay, I'm taking care of the entire organic. Okay, so yes, of course, if you see here also we have this terminal having two different group. One is a phenyl group, the other one is hydrogen group. Here we have other terminal has hydrogen and here we have methyl group. So restricted system, yes. Two conditions fulfilled. Second condition fulfilled, different group here, yes. So it's a big yes. Next one, question number 8. Good. Everybody, rock and rolling here also now. What about this? So Shlok is saying yes, Dhairya is saying yes, King Fan is saying yes. No. Shlok, it will not be syn anti. Like I told you, it is for azo and it is for oximes and not for this kind of a doubly bonded system with 4 different groups. For this kind of a system, what we make use of is ENZ system. So iska ENZ हमें करना नहीं है, but ENZ is not very difficult per se. Okay, kitne number of isomers honge is again the next question which we will be doing later, right? So I'll not answer it as of now. I don't want to digress from the agenda. So here if you see 4 different atoms, but conditions are still fulfilled. Restricted system, yes. Different atoms on either side. यहाँ पे भी different है, यहाँ पे भी different है, yes. So both the conditions are fulfilled, so it's a big yes. But what kind of a way of using the nomenclature here is ENZ. कई बारी आपको इस तरीके के सिस्टम में देखो cis and trans हम तब करते जब same type of groups or atoms were on the same side, then cis. Same types of group or atoms on the opposite side we would have called trans, है ना? यहाँ पे हम क्या सेम क्या अलग, चारों ही अलग है ना. तो हम क्या करते हैं, इनको प्रायोरिटी सेट करवाते हैं. R और S के लिए जो आपने प्रायोरिटी पढ़ी है वही प्रायोरिटी का तरीका यहाँ पे भी है. We go with that directly attached atom and look at its atomic number, not atomic mass, nothing else. Atomic number. अगर उसका atomic number जिसका भी ज़्यादा होगा gets a priority 1. If there is a tie, we go to the next one and see. If then also there is a tie, we go to the next one. If let's say next one is also carbon, if the other one is also carbon, but there is a double bond in one and single bond in the other, so double bond is seen like this. It is having 2, so that wins. So there are different rules that we apply to find out R and S. तो इसका जब हम बात करेंगे ना, तो ultimately it will be clear for ENZ also. Like I said, it is not a part of your syllabus, ENZ. Yet, having said that, आपको examiner पूछ सकता है इस तरीके का compound and they might simply ask, will it show geometrical isomerism? So, answer is no. So, like I said, is she the smart girl? This R and S and ENZ is clearly mentioned in the syllabus that it is not a part of the syllabus. But, बिल्कुल CIP rules से निकलता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. It is not a part of the syllabus, but having said that, जब हम डाइस्टीरियोमर्स और एनांशियोमर्स करते हैं, बिना आर एन एस के पढ़ना डाइस्टीरियोमर्स और एनांशियोमर्स को इज लाइक फॉलिंग इन अ डिच. आपको लग सकता है देखने में कि आंसर सही है, बट अगर आप जेई मेंस की बात करो तो आपका काम चल जाएगा. विदाउट इवन नोइंग ENZ एंड RNS आपका काम चल जाएगा. बट आपका काम कब नहीं चलेगा? आपका काम तब नहीं चलेगा जब आपके पास, बहुत सिंपल सी बात है, RNS की नॉलेज नहीं है, आप नहीं बता पाओगे स्टीरियोआइसोमर्स लाइक एनांशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं. हाँ, सुसाइड, बिल्कुल, किंग फैन. It is like falling from sky without parachute. So you will feel that अरे ये तो आता जाता है. These kind of questions are rank deciders. We are not here to just pass. We are here to pass with flying colors. We are here to get 1-digit rank. We are here to get 2-digit rank.
Huh? And every such question hence makes a difference. So when you do this rule, this comes as a complimentary gift, though this is absolutely not a part of the syllabus and not required also, not asked also, never asked also. But if we talk about RNS, though it is not in syllabus, but we will do it. Okay? I hope this is clear. So question 8 is done. Question number 9. King Fan is saying yes, Dhairya is saying yes, Shaurya is saying yes, Shlok is saying yes, King Fan is saying cis form it is. So trans to hoga hi, okay. Arjun is saying yes. Vishnu is also saying yes. So certainly, ye to classic cases. I mean, I don't have to even talk about it. It's a big yes. Question number 10 straight away. Shravan, let me get done with the isomerism part, and then every day we will meet, we will complete one chapter, right? Like I said, a lot goes in when we come here and conduct a session, a lot before that goes in. Because we do not want to waste your time by writing things there, narrating that ye likho bacha, uska time hai nahi hamare paas, right? That I write, that is very boring also. And I believe that things become a way more interesting when we have the structure right in front of us and we just bombard the answers. I draw, you wait till that time your concentration drops. Any which ways, this is a world of having least concentration possible. All that we can concentrate on is a YouTube short. Isse zyada to kuch bhi humko jamta hi nahi hai. We know our problems, don't we? So every time we're going to meet, we'll complete one entire chapter. Right? But let's just complete isomerism for now, right? चलो शिवम आप पे डिपेंड करता है, जल्दी से आप इसका आंसर बता दो. ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन है और एक फिनाइल है, और यहाँ पे एक मिथाइल है, एक H है. So different, there's a restricted system and there are different groups attached, so it's a big yes. Next one, question number 11. Will benzene ke bond be also showing geometrical isomerism? Is she the smart girl? Tell me, con cis or con trans yahan pe na? There is no possibility. If you see this kind of a double bond, nope. Right? There are just hydrogens possible. There is no possibility of hydrogen, one being on wedge and one being on dash, because it's there is a complete tetravalency already taken care of. So all it can be is in the same plane as that of the benzene. So not possible. Okay, so it's a yes. Clear? So there is hydrogen and there is this methyl group as two different groups on this terminal. And if we talk about the other terminal, there is H and D. Like I said, you will take isotopes as two different groups. So it's a big yes. Okay, ma'am, how to find geometrical isomers for cycloalkanes? Vishnu Pandey is asking. Pandey sahab, there is no direct formula for it. For finding the total number of stereoisomers, yes. But for finding out the GI for cycloalkanes, one specific formula, no. It will depend on the question that is asked, right? I'll give you the questions in a bit. First, let's just make the base ready. So I always ensure that we all do the things together such that हम सबको लेकर चले, जिसको अच्छे से आता है वो भी, और जिसको नहीं आता, जो बिल्कुल rudimentary बिल्कुल भूल चुका है उसको भी, सब at the pace, धीरे धीरे एक ही पेज पे आए. This is my agenda. So I try to start from basics and take it to a big, absolutely top-notch level. That also I assure. Good quality questions, previous year questions, best book questions, that is also something that we search and provide you. Right? So don't worry. Let's take it bit by bit. Question number 12. What about this now? So here, that rule that I've talked about, that lone pair is also going to act like one of the groups. So you have to be mindful about that.
So if you keep that in mind, what Shaurya is saying, what Dhairya is saying, what King Fan is saying is going to be yes. Minimum 8 carbons for cycloalkene. हाँ, ये आएंगे बच्चा, एक धीरे धीरे, one step at a time. So this is a big yes. This is an azo system, right? Next one, question number 12. Now this is an oxime. C double bond N OH. So here also lone pair is going to act like one of the groups. So this is also a big yes. Absolutely yes. No doubt about it. Bilkul. 13th. What about this? Yup. किस बात का yup भाई वैष्णु? केड़ा yup? What will be cis? What will be trans? Why yup? Huh? Just because it sounds cool? Nope. It's a big no. You have same atoms. This is your restricted system. And there are same atoms on either side of our terminals. And we need to have different. So it's a big no. Right? Okay. Name में कुछ है ही नहीं ना? You know 1,2-dimethyl cyclohexane. Here it will be 1,1. So you will start from the bromo 1,1-dibromo 2,2-3,3-dichlorocyclobutane. Simple, right? How about now this one? What is the number? Question number 14. So what about this? हाँ, तभी I always say that write the question number and give me the answer. है ना Vishnu? Okay, so here Shaurya is saying no. Rest, most of you are saying yes. So certainly, देखो इसमें doubt हो तो make a chair form of this, which you do in the conformational isomers. So if I draw a chair form, if I make CH3 like this is that when they are on the axial bonds, and this is when they are on the, one is on the axial and one is on the equatorial. So it is just the same way in which we can draw it like this, that one can be on the wedge and one can be on the dash. This is one way, and the other is both can be on the wedge or both can be on the dash. Both means the same, it's just the perspective which is changing. So this or this is same. Don't make it 4, okay? Don't make the number 4. These two are going to be same. And these two, because they're identical, right? So it's just the perspective which is changing. Or drawing this is same. So they both are same. So total 2 are only possible, and it's a big yes. So for 14th, it's a big yes. Shaurya, I hope you got why you're saying no. I do not know that. But the answer has to be a big yes. Not a yes, a big yes. Right? अगर यही मेरे पास ये होता, एक cycloalkene होता और CH3 होता, then it was not possible. Do you get that? Here GI is not possible because we have a very small ring and we do not have any possibility of twisting this ring. Right? There is no means that they're not same. They're absolutely same. It is just our way of looking at it. Do you understand? When we talk about the geometry, what is geometrical isomers? We look at the distances from the core of the two different atoms or group. So if we see the distance between the core of these two atoms or groups, here groups because we have methyl. So let's say if it is at a distance A, here also it will be at a distance A only because it is nothing but both are methyls. We are not doing enantiomers, bacha. We are doing geometrical isomers. Please read the questions carefully before answering. So it's a big yes. I hope you got that, right? Next one. What about this? Question number 15. तभी मैं कह रही हूँ, one step at a time. Now, if you directly apply your preconceived knowledge of enantiomers here, I bring questions only of that level जो हमने अभी इससे just पहले किया है.
ताकि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। अब जिसको एनहांसमेंट नहीं रहा उसके लिए एक नया दिमाग में कीड़ा आ जाएगा कि अब ये एनहांसमेंट कैसे हमको लगाना है। नहीं है, वो वाली बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। व्हाई डू इवन ओवरथिंक? प्रेजेंट मोमेंट। जब प्रेजेंट मोमेंट से शिफ्ट हो, टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ, तो यहां पे भाई क्या होगा सिस और क्या होगा ट्रांस? इतने सारे जनता जो 15 नंबर की यस बता रही है, मेरे को बताना कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस। हाँ बच्चा, ये जो है यहां पे हाइड्रोजन 1 2 3 4, राइट, ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम हुआ, आप कह रहे हो, है ना? हाँ देखा, नो आना शुरू हो गया। हल्का सा कुछ बोल दो, कॉन्फिडेंस हमारा ऐसा है कि यूं हम पलट जाते हैं। यस ही होगा। अच्छा, लेट्स सी। तो ये आपका अगर रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है तो हमारे पास भाई हाइड्रोजन्स हैं। तो ये हाइड्रोजन इस तरीके से कि आपके अगर 2 मिथाइल हैं आउट ऑफ द प्लेन, तो आपके हाइड्रोजन्स हो सकते हैं इनसाइड द प्लेन। करेक्ट? तो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, 100% है। सो अपना आंसर अगर फुल कॉन्फिडेंस से आ रहा है तो बदलने की जरूरत नहीं है। है ना? वेरी गुड। अब ऐसा तो है नहीं बाकी सब नहीं है ना? बाकी सब भी मिथाइल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये CH3 करूं और ये भी CH3 करूं, ये भी CH3 करूं, ये भी CH3 करूं, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। वन पॉसिबिलिटी, 2 को मैं CH3 कर देती हूं इस तरीके से आउट ऑफ द प्लेन, और 2 को मैं इनसाइड द प्लेन CH3 कर देती हूं। और बताओ पॉसिबिलिटी सारे, अगर मैंने सारे डैश पे डाल दिए, दैट इज सेम एज दिस वन। यू अंडरस्टैंड? इट इज गोइंग टू बी सेम एज दिस वन अगर सारे के सारे डैश पे हैं। और अगर कोई भी बाकी 2, अगर 2 वेज पे 2 डैश पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक ये वाली पॉसिबिलिटी है, लाइक दिस, CH3 ये वाले 2 वेज पे और ये वाले 2 डैश पे। है ना? तो अगर आप इनको देखो, सारे के सारे अगर वेज पे हैं, और दैट मीन्स ऑल द हाइड्रोजन्स आर गोइंग टू बी ऑन वन साइड, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सो आंसर यहां पे, हाँ आंसर यहां पे GI का देना फॉर द सेम ग्रुप, इफ वी लुक एट द डिस्टेंसेस यहां पे, बिकॉज बोथ आर ऊपर A डिस्टेंस अपार्ट है, तो यहां पे भी दोनों ऊपर A डिस्टेंस अपार्ट है। अगर 2 यहां पर लेट्स से ये दोनों ऊपर हैं तो A डिस्टेंस सारे एक दूसरे से A डिस्टेंस अपार्ट है, बट इसकी बात करें हम तो ये सम डिस्टेंस B होंगे। सो ज्योमेट्री तो अलग होगी, ये हमें समझ में आ रहा है। यू गेट दैट? बट सिस एंड ट्रांस कैसे बोलेंगे इस सिस्टम को, ये हमें अभी भी डाउट है। राइट? क्यों? क्योंकि आपको फिक्स मानने पड़ेंगे एंड देन ओनली यू कैन आंसर। राइट? In one of the left 2 are in the plane and the right one is above, one is below. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ श्लोक कि हमारे पास पॉसिबिलिटी आ रही है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंसेस वेरी जरूर करेंगे 2 मिथाइल ग्रुप के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसका जो अबव और ये बिलो वाला है, इसका पक्का अलग होगा डिस्टेंस। इट विल बी सम हायर डिस्टेंस बिकॉज वन इज अबव द प्लेन एंड वन इज बिलो द प्लेन। हाँ, क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट दिस? कौन से नंबर पे आ गए हम? 16th. I'm sure you can feel the level enhancing with every question now. पुरोहित साहब बीच में आकर अब आप कह रहे हो रामायण खत्म होने वाली है, आप पूछ रहे हो राम कौन है अब। सो आई एम श्योर
You can see it is similar to the previous one and it's a yes. Next one, question number 17. हाँ हिमांशु, पुराने वाले सवाल की तरह ही हो गया ना ये. अच्छा, अब 17 में ट्विस्ट ये होता कि अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से होता तो इस केस में इट वॉज अ बिग नो, बिकॉज इफ यू सी दिस साइड देर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, वन इज OH and one is the lone pair. Yes, there are two different groups on one side of the terminal. But if you see this terminal, there are same groups on the same side. यहां से आए तो ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, फिर आगे बढ़े ये भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, फिर और आगे बढ़े सेम कार्बन आ गया. So this is same group on both the sides. But if you see here, यहां से आप आगे बढ़े तो ये वाला कार्बन है, यहां से आगे बढ़े तो कार्बन है, बट यहाँ पे ये एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो दे आर डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड हेंस वी कैन से दे आर टू डिफरेंट ग्रुप्स. एंड सिंस देर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, इट्स अ बिग यस. It's a big yes. Okay, King fan, it's a big yes. हाँ, गायब होता हुआ no. ठीक है. Question number 18. So this was an oxime system. Oxime. What about this one now? Level enhanced. हाँ धैर्य, एक ही बारी में भी मेरे को बी जो आंसर है वो यस ही दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएगा आंसर. ओके, किंग खान, oh not king khan, king fan is saying a big yes. धैर्य is saying sp3 है इसलिए yes. विष्णु is saying no. ऋषभ, ऑब्जर्वेशन से ज्यादा यहां का ऑब्जर्वेशन है, कंपाउंड 18th का. Shlok is saying yes, Khushwant is saying yes, Fresh Gamers is saying no. Okay, GI आंसर दे दिया है ऑलरेडी. अच्छा ओके, उसके बाद ऑब्जर्वेशन चल रहा है. चलो फिर ये देखते हैं यहाँ पे क्या होगा सीन. यहाँ पे टेट्रावेलेंसी है, मतलब एक HB है यहाँ पे, right? So 1 CH3 and 1 H. Of course, this can be a restricted system. Cyclosystem can be a restricted system. Condition 1 fulfilled. Condition 2 fulfilled because we have an N here and it would be having lone pair. हर बारी examiner आपको spoon feed नहीं करेगा lone pair के साथ ही. Automatically understandable है कि नाइट्रोजन अमोनिया पे भी बना देते हो ना खुद ही. कोई आपको आकर नहीं बनवाता ये लोन पेयर, आपको पता है लोन पेयर अमोनिया पे नाइट्रोजन पे है. So one group is this lone pair and one is hydrogen, right? So it is a big yes. Clear? 19th. Let's see this one. Across the doubly bonded system, doubly bonded hai, there will be restricted system, and if you see the two different groups, so Shashank, make sure देख लो ये वाला टर्मिनल दो अलग अलग ग्रुप्स है, ये वाला टर्मिनल ये कार्बन है और ये कार्बन है, बट ये वाला कार्बन के ऊपर मिथाइल और यहाँ वाले पे नहीं है, so they are going to be considered as two different groups. So it's a big yes. So Himanshu, I hope you've understood, it's a big yes. 19th is a yes. Got it? 20th, how about this one now? We have two isotopes now. हाँ, तो अब आप देखो doubly bonded system में एक हाइड्रोजन लगा एक ड्यूटीरियम, and we have understood the isotopes are considered as two different groups. So these are different groups.
And if you see here, again, you have two different isotopes. So isotopes are considered different groups. So it's a big yes. It's a big yes. Got that? I hope now every nuance is taken care of. सिर्फ पहला एक example doubly bonded system का cis and trans कराना बहुत आसान है. But this will make your concepts strengthened to the core. What about this one now? Rapid fire. Come on. तो ये तो है, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. आई डोंट थिंक सो दिस रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन. ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था. इट्स अ यस. व्हाट अबाउट दिस वन? क्वेश्चन नंबर 22. तो इसमें रिंग आपका रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है. नाइट्रोजन का लोन पेयर हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो जो दूसरे वाले नाइट्रोजन का है, और हाइड्रोजन इस तरीके से सेम साइड पे हो. और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पे और दूसरे का नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पे. एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां है. क्लियरली इट विल शो GI. सो इट्स अ बिग यस. Sodipta, I hope you get it. Huh? Rest were all saying yes. Very good. Good job. Okay. Question number 23. What about this one? Moral of the story, नाइट्रोजन का लोन पेयर कोई आपको बनाकर नहीं देगा. You have to assume it on your own. इतना स्मार्टनेस रखनी है कि हम पहचान पाए खुद ब खुद कि लोन पेयर है या नहीं. क्लियर? सो 23 ऑफ कोर्स लोन पेयर है, तो दो यहां पे भी हो गए. रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, ये हमारा डबल बॉन्ड एक रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम की तरह काम करेगा. ये नाइट्रोजन का एक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एक ग्रुप है. टू डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल हैं ऑन दिस पर्टिकुलर टर्मिनल. ये वाला कार्बन इट्स अ टाई. यू गो टू द नेक्स्ट वन. ये कार्बन आया और यहाँ पे ये वाला कार्बन आया विच इज अटैच्ड टू CH3. सो बोथ द एनवायरमेंट्स आर डिफरेंट. सो इट्स अ बिग यस बिकॉज वी कंसिडर इट टू डिफरेंट ग्रुप्स. So how you have to travel and look for any change in the environment, I am sure is clear now. Next one. अब आपके पास साइक्लोएल्कीन सिस्टम है. कितने कार्बन की रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 कार्बन की रिंग है. हाँ, ये तो सिस फॉर्म है. सो अगर मैं यहां पे ये डबल बॉन्ड देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं इसको 1 और ये 2 बोल रही हूं, सिर्फ कार्बन्स को देखो. अगर मैं यही वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या हो गया है? अब ये वाली पोजीशन 1 और 2. बट इफ यू सी यहां पे ये मिथाइल ऊपर जा रहा है, ये वाला मिथाइल नीचे जा रहा है. इफ यू सी यहाँ का ये वाला हाइड्रोजन नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है. बट यहाँ पे इफ यू सी बोथ द हाइड्रोजन्स आर अप, सो इट्स अ यस. But which form will be stable? Let me clear the air here. For cycloalkene system, आपके पास 3 सिनारियोज हैं. लेस देन 8 मेंबर्ड रिंग अगर है, आपका 8 से 12 मेंबर्ड रिंग है या 11 ले लो, और 12 के बियॉन्ड है, ग्रेटर देन 12. ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है. तो यहां पे 8 तक देर इज, लेस देन 8 तक देर इज नो ट्रांस पॉसिबल. सो नो GI दैट मीन्स, क्योंकि ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है. जैसे साइक्लो एल्कीन ले लो, इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है ही नहीं. नो ट्रांस पॉसिबल, सो नो GI. बट 8 to 11 में देर इज इनफ स्पेस दैट देर कैन बी सम ट्विस्ट एंड टर्न्स सच दैट यू कैन हैव बोथ सिस एंड ट्रांस. सो GI इज पॉसिबल. Cis is also possible, trans is also possible, but you will see cis is more stable.
पॉसिबल है बट सिस इज मोर स्टेबल. बट 12 एंड बियॉन्ड जो है इनफ स्पेस होता है कि रिंग आराम से ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है और जीआई एग्जिस्ट करता है, सिस एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सो दैट ट्विस्ट एंड टर्न इज अ थिंग विच इज जस्ट अवेलेबल आफ्टर 8 कार्बन्स एंड नॉट बिफोर. बट ट्विस्ट एंड टर्न्स करने में भी दिक्कतें हैं. अगर ट्विस्ट कर लिया और फिर भी कार्बन कार्बन के क्लाउड एक दूसरे को धक्का मारे, दैट्स नॉट एन आइडियल सिस्टम. सो आई एम श्योर द स्टेबिलिटी पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. सो कीपिंग दिस चार्ट दैट आई हैव हेल्प्ड यू आउट in mind, question number 25 for you. कितने कार्बन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन रिंग है. So cis and trans is possible, but if you look at the form, then this cis will be the most stable form as compared to trans. Okay? चलो. Now let's enter syn anti realm. सिन एंटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या एन डबल बॉन्ड एन में होता है. इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द ग्रुप. सिन मतलब सेम साइड, ऑपोजिट साइड का मतलब एंटी. जैसे कि यहाँ पे देख लो, अगर एजो सिस्टम है, लोन पेयर ऑपोजिट है तो एंटी बोलोगे आप, लोन पेयर सेम साइड पे है तो सिन बोलोगे आप, राइट? और अगर हमारे पास इस तरीके का सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम है instead of azo system n double bond n, so in this kind of a system you will see H and OH if are on the same side we call it syn, and if H and OH are on the same side, on the opposite side, we call it anti, right? तो यहाँ पे H and lone pair को देख लो आप, same side, इसके basis पे rather going on that you can go on the same group wala side. If the same groups are on the same side, we can call it cis or syn. The right way when you have lone pairs is the usage of the term syn and anti. So जब lone pairs हैं, the best practice is syn and anti. Okay? When you have 4 different groups, the best practice is using the nomenclature of E and Z. Okay? So I wanted to clear this out, though ये amines chapter में हम दोबारा देखेंगे भी. So H and OH are on the same side and H and OH are on the opposite side here. So check this out, OH and H opposite side, anti. OH and H on the same side, syn. Okay? But आप ये भी देखो, यहाँ पे जब हम ऑक्साइम की बात कर रहे हैं तो कई बार आपको नॉमेनक्लेचर इस तरीके से भी दिखेगा बुक्स में कि सिन मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइम. सिन मिथाइल इथाइल मतलब कि आपका जो OH है उसके सेम साइड पे अगर मिथाइल है तो जो भी OH के सेम साइड पे वो हम लिख देंगे पहले सिन मिथाइल, अदर वन देन वी विल राइट इथाइल कीटोऑक्साइन, एंड एंटी इथाइल मतलब कि इस OH के एंटी में क्या है, इथाइल ग्रुप. सो एंटी इथाइल मिथाइल कीटोऑक्साइन, ये दोनों ही सेम बात कन्वे करता है. सो दिस इज जस्ट टू क्लियर द एयर, दो आई हैव हार्डली सीन एनी क्वेश्चन कमिंग अप फ्रॉम हियर, बट this is a doubt that most of the students ask me, so I've taken it up already. Okay, so I'm sure this nomenclature is clear. So now here also if you see OH की same side पे ethyl है, so I can call it syn ethyl methyl ketoxime, or if you see OH की opposite में methyl है, so I can call it anti methyl ethyl ketoxime. Okay, clear? जब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, सिस और ट्रांस में से कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सिस और ट्रांस में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है. जनरली डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज 0 प्रोवाइडेड आपके पास सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स ऑन आइदर साइड है. जैसे मिथाइल और हाइड्रोजन एक साइड पे तो मिथाइल और हाइड्रोजन ही दूसरी साइड पे है, क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साइड पे है तो क्लोरीन और हाइड्रोजन ही दूसरी साइड पर है. So in those kind of cases it is simple, but if you have A, B, C and A kind of a system, like 2 on one side like this, so do you understand, this is a trans system, but I cannot say mu is equal to 0. I can't say that.
So always saying that mu is equal to 0 for trans is wrong, children. Generally it is 0, but I hope you will always look at the polarity accordingly. So mu generally, the dipole moment generally of trans will be 0 if you have the same type of groups on either side of the doubly bonded system. अब म्यू के ऊपर बात क्यों आ गई? म्यू पे बात इसलिए आ गई है क्योंकि अगर आपको डाइपोल मोमेंट पता है तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है. तो डाइपोल मोमेंट अगर पता लग गई, सो यू वुड नो द पोलैरिटी, यू वुड नो हेंस द सॉल्युबिलिटी. कौन जितना ज्यादा पोलर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी. You would know the boiling point. जितना ज्यादा mu उतना ज्यादा boiling point. Here the funda of branching, non-branching doesn't exist. Here we are not talking about hydrocarbons. We are talking about two different geometrical isomers. So how do we go by? We look at the dipole moment. Whichever is more polar will be having higher boiling point. अगर melting point की बात करी जाए तो अगर आप देखो जितनी ज्यादा packing efficiency, ये तो एक जूते वाले को भी पता है. जूता खरीदने जाओगे तो वो जूता इस तरीके से पैक करेगा कि दो जूतों की हील्स जो है वो ऑपोजिट फेसिंग होगी, ना कि कभी भी एक तरफ फेसिंग. यू गेट दैट? कभी भी दो जूतों को की हील्स वो मिलाकर या सोल्स मिलाकर नहीं देगा, वो उल्टा रखेगा, ट्रांस पैकिंग देगा, क्योंकि ट्रांस पैकिंग इज मोर एफिशिएंट. सो इफ वी हैव टू पैक आवर कंपाउंड्स आल्सो, वी पैक इट लाइक दिस. यू नो, the efficient packing is not like this. They will repel each other, but efficient packing is rather like this. I am just going to move so that you can see. So trans will have more melting point as compared to cis. So these are the things that we will do in hydrocarbons also, but just wanted to clear out that GI can be clubbed with the physical properties kind of questions. But I hope this is clear, right? चलो, अब आता है the agenda of the day, optical isomers. GI में तो इतना नहीं दिक्कत होता है. रमेश भाई बीच में आकर आप ये बोलो समझ नहीं आया, ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना बॉस. और क्या समझ नहीं आया ये भी बताना जरूरी है ना? तो अब जो एजेंडा स्टार्ट हो रहा है वो है दी एजेंडा ऑफ द डे, ऑप्टिकल आइसोमर्स. क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स? आर यू ऑल सेट? नंबर ऑफ जीआई. शौर्य, ऐसे सवाल हम तब करेंगे जब हम एक बारी OI भी कर लेंगे, ताकि हम टोटल आइसोमर्स करेंगे तो हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ GI भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ OI भी, हर चीज कंबाइंड हो जाएगी. सो दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो लेट्स डू OI फर्स्ट, देन वी विल कम टू द नंबर and we will see the questions also. Like I said, 50 questions are going to wait for you for the next session. So everybody, let's get started. ऑप्टिकल आइसोमर्स देखो थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आता है कि मैम क्या करें इसमें. क्या हम दो कंपाउंड्स की सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करें? क्या हम एक कार्बन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है उसको चेक करें? क्या हम प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या कोई और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखकर चेक करें? या फिर हम क्या कंपाउंड को सीधा पोलैरिमीटर में डालें और चेक करें? सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू गो अबाउट टेलिंग वेदर समथिंग इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट. But at the first place, what is optically active compounds? Do you understand what we are trying to say here is, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं जो एकदम ट्विन्स है, एकदम सेम टू सेम, सब कुछ सेम, दिखने में सेम, बैठते सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, वेपर डेंसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है. बट क्या डिफरेंट है? कुछ तो डिफरेंट है कि भाई एक कंपाउंड, जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की बात करें तो वो कुछ अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं, इस तरीके से कि एक रोटेट कर रहा है प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज और एक रोटेट कर रहा है प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज. कहने का मतलब चीजें एक्सपेरिमेंटल है. ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा
किस फॉर्म में, वो हम देखकर नहीं बता सकते. दैट ओनली एंड ओनली पोलैरीमीटर कैन टेल अस. व्हाट इज पोलैरीमीटर? पोलैरीमीटर इज अ डिवाइस विच विल हेल्प अस इन पोलराइजिंग द प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड. लाइट आपको पता है एक अनपोलराइज लाइट है. अनपोलराइज लाइट का मतलब है कि 360 डिग्री डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट अप बिलो, नॉर्थ लेफ्ट, नॉर्थ राइट, एवरीथिंग, आई मीन all possible directions में it is propagating. You pass it through a prism and then it starts rotating in one single plane. वो एक ही प्लेन में रोटेट होने लग जाती है. That means light has been polarized. Okay? हम we use the term for people also ना, भाई ये तो polarized, ये polarize कर रहे हैं. हाँ? This political party is polarizing. When we are using this term polarizing, matlab it is inclining you towards one thought, towards one perception, towards one ideology. That's when we use the term polarizing, right? Aajkal polarizing is a buzzword of our country. Our country is buzzing up with this word. Or if you want to take a normal example, not a political example, but a normal example, let's take a kitchen example. अगर आप आलू को देखो 360 डिग्री डायरेक्शंस में फैला हुआ है, फैलता भी है और फैलाता भी है हम लोगों को. बट अगर हम अभी आलू की ही बात करें, सिर्फ एक पोटैटो की बात करें, देन इट इज अ 3-dimensional स्ट्रक्चर. इन ऑल डायरेक्शन इट इज प्रेजेंट. बट व्हेन यू पास इट थ्रू अ ग्रेटर, द स्लाइसेस ऑफ वन सिंगल type comes out. That means you've polarized the aloo. Aloo is no more now in all 3 dimension. It is in one single plane. So something of the sorts is happening in this kind of a polarizer. This is how the polarizer looks like. Okay? So if you see, हम यहाँ पे इसके अंदर देखें तो हम एक अनपोलराइज लाइट लेते हैं जिसको हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट बना देता है. मतलब कि लाइट हमारी अब एक ही प्लेन में पोलराइज कर रही है, रोटेट कर रही है. फिर हम वो एक सैम्पल ट्यूब लेते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं और देखते हैं कि या तो हमारा जो लाइट है वो क्लॉकवाइज रोटेट करने लग गया या फिर एंटी क्लॉकवाइज. 2 ही पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट 3 पॉसिबिलिटीज है. या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर कुछ नहीं करेगा. अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया है, वी कॉल दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विच इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज, वी कॉल देम डी फॉर्म. D form, D for dextro. Dextro means right-handed. We also represent it by plus, means the same. D, small d and plus means the same. Agar it is rotating the plane of the plane polarized light anti-clockwise, that means it will be L, levo, L, or minus means the same, right? और अगर कुछ नहीं किया तो लाइट जिस डायरेक्शन में पास कर रही थी उसी डायरेक्शन से निकल गई, तो मतलब कि द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो आपने समझा, यहां से हमने एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दिया, एक प्लेन में कर दिया. फिर हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है. यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया वो कुछ इस तरीके से था कि उसने जो लाइट है उसको लेट्स से एक डायरेक्शन में रोटेट कर दिया. सो the plane polarized light has been rotated in one direction. So that means it was an optically active compound. The observer looks like me. I don't know if to take it as a compliment or a comment, Raghav. But whatever. Yeah, I mean, in terms of chemistry, I take it all. So let's now talk about the optical behavior. Optically active compounds and optically inactive compounds are clear from the experimental basis. Right? अब what kind of molecules will show optical activity? हम देखकर हर वक्त तो लैब में नहीं भाग सकते ना. हर वक्त एक कंपाउंड लेकर हम चले जाएं लैब में कि हाँ पोलैरीमीटर दे दो थोड़ी देर के लिए, हमको चेक करना है. We can't do that. So when we are asked, we first look at the compound का क्या structure होगा and we talk about superimposability and non-superimposability when we have a structure on paper. So when we have a structure on paper, we simply check the optical activity, or to say chirality. Chirality means this thing only, right?
superimposition. So hand is chiral by superimposing its mirror image. You can see the two hands. So you have to take both in one single direction. Don't take it like this कि मैम ये तो चिपक गए हैं. Huh? Not like this. How you do मछली जल की रानी है, right? How do you do मछली जल की रानी है? You take one hand, you take the same direction of the hand, put it over each other, and मछली जल की रानी है you do, right? That means you're able to do these two fingers like this because, of course, they are non-superimposable, right? Meaning, if we have non-superimposable mirror images, now this is only true when we have a structure given on paper. We can't check superimposability by taking two compound कि आओ ये दो compound है इनको जरा चिपकाते हैं. ऐसा नहीं करते ना, हमारे तो molecules हैं ही बेचारे एकदम माइक्रो, है ना? उनको ऐसे थोड़ा ना हम superimpose कर सकते हैं. It is very micro level. So here we are talking about the representation on paper only. So you have understood that if they are going to be non-superimposable mirror images, that means they are going to be optically active. So one parameter is superimposability. Non-superimposable mirror images are optically active, but you would see that this parameter might not hold true. There might be compounds which are maybe non-superimposable. देखने में लग रहा है कि non-superimposable है, and turns out to be optically inactive if they have an element of symmetry. So knowing the element of symmetry is equally essential, and this is also very cumbersome. See, यहाँ पे chill था चीज क्योंकि यहाँ पे इतना छोटा सा molecule है. There's just one carbon with bromine, with fluorine, hydrogen and chlorine. There was just one carbon. What if we have a humongous molecule? Nobody has time and energy to imagine a mirror and make its image, right? You get that? So a compound which is superimposable to its mirror image is going to be optically inactive, but you might simply see that there are compounds which are non-superimposable mirror images, yet they are optically active. For that, we would know the different ways to find them out. One is checking the plane of symmetry, the other one is checking the center of symmetry. There are also other elements of symmetry, like alternate axes of symmetry, let's say. Symmetry of inversion, let's say. But we are not going to do that. In our syllabus, in the scope of our JEE Mains and JEE Advanced syllabus, knowing and checking these two symmetry elements suffices our purpose. क्या मतलब हुआ suffice का purpose का? What is that? कि अगर दोनों absent है, if POS and COS both are absent, our compound will be optically active. दोनों में से एक भी present है, our compound will be optically inactive. Right? So plane of symmetry क्या है समझ लेते हैं. Plane of symmetry is nothing but a plane passing through an object molecule such that the part on one side of the plane is the exact reflection of the part of the other side. The plane is acting as a mirror. So you have to plan such that you pass a plane, and that plane should divide the molecule in two equal halves. So जो आपने plane pass किया वो molecule को दो equal half में divide तो कर रहा है, but वो divide ऐसा भी करना चाहिए कि first half is the mirror image of the other half. और जब आप ऐसी बात कर रहे हो कि first half is the mirror image of the second half, that means you are imagining one mirror passing through it. Right? Let's check this out. Plane की बात हो रही थी, plane ही ले लेते हैं. हाँ? Aeroplane. Now do you see, I can pass this particular plane, जो red line आपको दिख रही है, it can be taken as one plane, such that it is dividing the plane, the aeroplane in two equal halves, and this half, if you see, इसका mirror image यहाँ बनना चाहिए था, बिल्कुल बन रहा है. इसका mirror image यहाँ बनना चाहिए था, बिल्कुल बन रहा है. इसका mirror image यहाँ बनना चाहिए था, बिल्कुल बन रहा है. The two halves are mirror images of each other. So this kind of an element has a plane of symmetry. So if a molecule can be divided in such a way, I mean, if from a molecule, if you can pass a plane in such a way that the plane bisects the molecule,
divides the molecule into equal halves, and one half is the mirror image of another half. अगर ये एक horizontal plane pass करते तो by no means you could have mirror images, क्योंकि यहाँ पे wheels है तो ऊपर भी wheels होने चाहिए थे, which is not there. So you need to pass a plane which is going to divide the molecule into equal halves such that the first half is a mirror image of the second half. Now try this one. Water, does it have plane of symmetry? You need to see things in three-dimensional. Beautiful it is, see. So I'm sure you can imagine a plane passing between this hydrogen, and between the two lone pairs such that first half is the mirror image of the other half, and the two, you can see one side is acting like a mirror image to another, right? So yes, plane of symmetry exists. Similarly, if I talk about BF3, does it have a plane of symmetry? Will it have a plane of symmetry? It will. Every fluorine and boron you take, हाँ, अगर यहाँ से काटोगे then these are mirror images, यहाँ से काटोगे these, so you can pass three planes and one plane bisecting all the three fluorines and boron at the same time. So there will be four planes of symmetry possible. Even one, if you see, you're done. Plane of symmetry, if is present, that means the compound is going to be optically inactive. Right? ठीक है, ऐसे पानी के लिए भी इमेजिन करो क्या क्या हो सकते हैं. एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से. There can be another plane, so there can be, like I've shown here. दोनों ही मैंने plane of symmetries आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, है ना? If you see राघव, 3D में दोनों plane of symmetry देख लो. एक ये है और एक और है जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों से पास कर रहा है, like this. The other one. So this is one. जो सिर्फ दोनों लोन पेयर्स और ऑक्सीजन, and this is two of them together, you can see here, right? So I'm sure even one is present, your job should be done. Look at this. यहाँ पे देखो, सारे के सारे plane of symmetry अच्छे से देख लो. I want you to develop this analytical skill, this imagination, so that you can observe the molecule without any assistance on your own in your mind. तो तीन ये हो गए और एक और चौथा, this one. So there are plane of symmetries, and plane of symmetry होने का मतलब क्या है? The compound is optically inactive. So all these are plane of symmetries here. Look at this, all four. Now tell me for this question for you, will this molecule show plane of symmetry? Yes or a no? Raghav is saying no, Shaurya is saying no, Arjun is saying no, Shlok is saying no. तो आप देख रहे हो दोनों क्लोरीन opposite to each other है. By no means we can have a plane such that it is going to bisect the molecule in two equal halves such that the first half is the mirror image of the second half. By no means that is possible. By no means. इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा प्लेन अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे मिरर इमेज तब होता जब ये वाला क्लोरीन भी ऊपर होता, दूसरे वाला क्लोरीन भी ऊपर होता. ऊपर नहीं है, नीचे है. नीचे है मतलब मिरर इमेज नहीं है. So there is no POS and hence this compound is going to be optically active, right? This is not cis form बच्चा, this is trans form. Cis form will, हाँ 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 राघव बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, सही बात.
तो या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दोनों चेक करना जरूरी है, ठीक है. यू कैन जस्ट गो ऑन. अब क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं, दैट वी हैव टू चेक. प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, doesn't ensure the compound to be optically active. You have to check for now the center of symmetry. How do we check the center of symmetry? Very simple. A center of symmetry is a point within an object or compound such that a straight line drawn from any part or of element of the compound, I can say element of the object to the center and extended an equal distance on the other side encounters an equal part or element. बहुत simple सा है, बहुत जो भी language लिखी हुई है, let's understand it very simply. इमेजिनरी पॉइंट सेंटर में इमेजिन करना है कंपाउंड के, मॉलिक्यूल के, ऑब्जेक्ट के. वहां से चलना शुरू करना है एक डायरेक्शन में. जो कंपाउंड मिला, ए मिला आपको, सेम जो सेंटर आपने इमेजिन किया उससे दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे. सेम डिस्टेंस पे, अगर ये डिस्टेंस डी पे ए मिला तो डिस्टेंस डी पे ही दूसरी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सेम कंपाउंड, सेम एटम, सेम ग्रुप मिलना मांगता है. राइट? हाँ, जेई एम कर रहे हो 2025 का, तो ये आपको अभी टाइम है पढ़ने में. दिस इज क्लास 12th and not class 11th. Okay? So optical isomerism is a topic of class 12th. Geometrical isomerism is a topic of class 11th. We are doing it together. So if you see, अगर मैं ये वाले balls देखूं, pink balls जितने डिस्टेंस पे है इस सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पे पिंक बॉल इस डायरेक्शन में भी है. ग्रीन बॉल अगर इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे तो ग्रीन बॉल यहीं पे भी है. ऐसे अगर क्यूब ले लो 3 डायमेंशनल, सो यहाँ पे यू कैन इमेजिन अ पॉइंट, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दैट पॉइंट. सेम ग्रुप शुड बी should appear if you're going to either side of that particular imaginary point. ठीक है? Okay, next one, अगर मैं यहाँ पे भी चेक करूँ या ये भी चेक करूँ, all of them have, we are meeting the same groups at the same distance in the opposite direction, so there is COS. Similarly यहाँ पे भी COS है, ये देखो, center of symmetry, right? पूरा का पूरा COS available है. Beautiful. So there is center of symmetry. So now I'm sure COS is also clear. You can check it in the compounds. For example, if I take this particular compound, if we have CH3 here, the CH3 should be here. So if I am planning to find out a COS here, if hydrogen is here, if I have gone this distance, then going this much distance should have given me hydrogen. There is no hydrogen, so there is no COS. You can check it like this. But if I take cyclobutane and do the same thing, let's say I draw it like this, CH3 यहाँ पे और CH3 यहाँ पे, then let's say this is above the plane and this is below the plane, then you may say कि जितना डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में गए और हमें मिथाइल मिला, उतना ही डिस्टेंस हमें इस डायरेक्शन में जाके मिथाइल मिला. So COS will exist here. Got that? How you have to find imaginary point, go in opposite directions, same distance पे same atom molecule मिलना चाहिए. Now chiral carbon क्या है, ये भी एक तरीका है. जब आपके पास, सबसे ये शॉर्टकट तरीका है, जब आपके पास एक सिंगल कार्बन हो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड, वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा. बाय नो मीन्स यू कैन हैव you can have imposable mirror images. It will always have non superimposable mirror images. तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है. POS, COS भी चेक करने की जरूरत नहीं है. If there is a compound with one single carbon having 4 different groups, that compound is chiral, optically active. Chiral का अलग मतलब, दूसरा मतलब है, it started from the meaning that the hands were superimposable, but then the hands were non-superimposable. वहां से term आया chirality, but which means handedness. So chiral means handedness. But later on, there were more layers that were added to it as we studied the topic in greater depth. So a molecule that contains just one chiral atom is always chiral and hence optically active. Like इस तरीके का compound है तो optically active ही होगा. If a carbon atom is attached to one hydrogen and one deuterium, like I said, Rushabh, deuterium will be considered as a separate group, not the same group, right?
Okay, so with this, we are done with the most basic understanding possible of GI and OI. Now, I will add more layers to this understanding with questions in the next session. So I'm going to come up in the next session with 50 questions. That will include the questions of biphenyl systems also and cumulene systems also. So I would want you to do a homework. Please make sure you understand, come up with the learning of how the cumulenes and biphenyl systems, geometry, कैसे वो उनका structure होता है, come prepared looking at that. Now at 3 o'clock we are also meeting for a Menti quiz wherein I am coming up with previous year questions along with Bhumika Man. So I'm expecting all of you to be there and try your skills or whatever you've learned. It's going to be short, it's going to be sweet, and it's going to be fun. Right? So revise whatever we have done. Next session when we meet for isomerism, it's going to be a lot of questions. We would not have even the time to take a breath. So come prepared, revising whatever we have done so far. All right? So with this is me signing off. See you very soon.